Yes, Atulji, you can go ahead, please. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના કર્ણાટક ફેડરેશન, ઉત્કલ ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન આધુનિક વિજ્ઞાન અને ઉચ્ચ સ્વના વક્તા પ્રદીપજી, યમુનાવતીજી અને સ્વસ્તિ શિખાજી મહાપાત્રા તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યો અને આજના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશીનું સ્વાગત કરું છું. સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરીશું. શરૂઆત હું કરાવું છું, આપ એને રિપીટ કરશો. ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ. Oh, hidden Oh, light. hidden light vibrant in every atom. ઓ હિડન લાઇટ શાઇનિંગ ઇન એવરી creature. Oh, hidden light shining in every creature. ઓ હિડન લવ એમ્બ્રેસિંગ ઓલ ઇન oneness. Oh, hidden love embracing all oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know they are therefore one with every other. know No, they are all one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓ હિડન લાઈફ શ્રી તરલભાઈને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई। और बस कुछ ही क्षणों में हम शुरू करते हैं। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है और एक छोटा सा परिचय दे दूं प्रदीप जी का। प्रदीप जी एमएस बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री की हुई है। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपनी के लिए वे बिजनेस मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक पेशेवर सलाहकार भी हैं और वो तीसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं और बचपन से ही स्वाभाविक रूप से उनका थियोसॉफी से परिचय हो गया। 2002 में वे एक सक्रिय सदस्य बन गए थियोसॉफी के और कर्नाटक के विभिन्न थियोसॉफिकल लॉज में व्याख्यान दे रहे हैं। अभी साउथ कॉन्फ्रेंस में भी वे काफ़ी योगदान देने शायद कल ही अडियार पहुंचेंगे। स्वागत है आपका। आज का विषय पर इंग्लिश में आप शुरू कीजिए। धन्यवाद। Very good evening to everyone, and welcome to again a very thought-provoking speech by Dr. Besant. So, since last month, I have been taking up Dr. Besant's speeches and discussing them here in Triveni meeting. So today, the topic which I selected is modern science and the higher self. This was a speech given by Dr. Anne Besant, and it was also published as an Adyar pamphlet number 56 in the year 1915. Okay. First thing that strikes to our mind when we hear these two words, modern science and the higher self, I think we all get surprised and we start questioning, or it seems to be something like a radical thinking, or sometimes maybe a deliberate attempt to find relation between these two things. Nowadays, whenever we try to give some scientific evidence or scientific basis for various philosophical or spiritual theories, at the outset, it seems to be a deliberate attempt to justify all that is being said theoretically, or all that is being said 2000 or 3000 years back and found in some scriptures. But if we try to understand how these two aspects, the science, modern science, and spiritual concepts, if we don't see them as something two opposing poles or something totally opposite to each other, saying something totally different to mankind, if we are open, if our minds are open,
if we try to analyze, then we see there is a great amount of relationship between these two aspects. So that is what Madam Besant is trying to deal here. Through this lecture, she's trying to say how modern science, that a great deal of research or progress has been made in the West, and the spiritual aspects of higher self, of which a great deal of research and scriptures have been written in the Indian context, how these two are different, but at the same time trying to find the same absolute truth, but in a different approach. What is the way of Western world of dealing with what is called metaphysical or superphysical, or something that is beyond the senses and scientific uh, experiments? What is the way of dealing with it? The Western scientific progress or scientific approach is from the bottom to the top. In science, we study what is available readily, that is visible to the eyes, and can be analyzed through the senses or through our instruments or whatever we have. So we study the body. We study the body, we study the brain, the nervous system, and then we go one step further and we study the mind, the thought process, uh, memory, consciousness, during when the body is awake, the consciousness during when the body is sleeping. And we even go further and do various experiments of hypnotism and all those things. So the Western way of studying human mind and its functions is from the bottom, through the body, through the nervous system, and then further going to its activities. But in the Indian context, it was not so. It was always studying from that higher consciousness, or that which is beyond this physical body. First, to reach to that level of higher consciousness, to go beyond this physical body, to be in that state of that higher consciousness or the higher levels of consciousness, and then to experience that and then make note of it, and then all these scriptures were written. So these are the two different approaches of modern science, that is the great deal of progress being happened in the West, and the Indian context of spiritualism. However, the main aim of these two approaches was to find the truth. What is that beyond this physical body? What is that beyond this thing called mind that we see, that we can feel or we can perceive? What is that beyond these thoughts? What is that consciousness that is acting beyond this mind and the body? So to find that basic truth, these two different approaches in the West and in the Indian context have been followed for centuries. Now, Madam Besant is making very clear that what she means by higher self. Higher self means what is called as JEEVATMA in the Indian context. JEEVATMA, which means anything that is above this physical body, above the activities of all the activities of this physical body, like the emotions and even the mind and its activities like thoughts. So she's putting together all that is above body, emotions, and thoughts as one concept, as higher self, and she's naming it as, she's using the word JEEVATMA. Now, what concepts of science, modern science, is dealing with these aspects? The first thing was psychology, right? Psychology greatly dealt with
mind, its functions, its effects on the body, and it affects on the human emotions as well as. To some extent, there was another branch of science which is called physiopsychology, where the nervous system and the brain was studied, and then a relationship was made between the nervous system, the brain, and the kinds of thoughts and emotions that arise out of this this physiology, these physiological conditions of any particular human being. So these two aspects of science greatly dealt with studying the body, studying the brain and the nervous system, and then dealing with the thoughts, the kind of thoughts and emotions that are arising from that particular case, what they're studying, and then making a connection between these two things. So famous scientists, for example, Professor Tyndall, he made a statement that if you want to really study the true potential of every life form, then it is inevitable that men should begin to study thought by the study of its mechanisms. So if you want to study the true potential of every life form, then you have to study, it is inevitable to study the thought and its mechanism. And there was another famous physiologist, a German physiologist called Karl Vogt, who made a statement that brain simply produces thoughts. Am I audible? Last two sentences we missed. Please repeat the last two sentences. Okay, hold on. Okay. So I was talking about these two famous personalities, Professor Tyndall and German physiologist Karl Vogt, who made a statement that brain simply produces thoughts, just like liver produces bile. So he said, brain is also an organ, of course, just like all other organs in the body. And it simply produces thoughts, just like all other organs produces whatever they produce for the functioning of the body. So this was the approach of the modern science. That is, to study the human body, to study the physiology of the human body, the nervous system and the brain, and then decide what kind of thoughts, what kind of emotions arise out of this physical body. So that the core center of the study was the physical body. The modern science, the approach of the modern science research was that the physical body decides, the organization of the physical body decides the kind of emotions and thoughts being produced. But however, this was in total opposition to the Indian context, to the Indian psychologists. I mean, the great sages and saints who did an enormous amount of study with this subject a few hundred years or even 1,000 years before. Here in the Indian context, it was not so. Here, the idea that the human body is just a vehicle was the first approach. That the human body is not the deciding factor. The physical body that we see is not the deciding factor. It is the higher self or JEEVATMA, which is the deciding factor, which resides in this vehicle. So always there was a clear-cut differentiation between the physical body and the spirit living in this physical body. And the Indian context or the Indian approach was, it is that JEEVATMA which decides the formation or the characteristics of the body, and hence the thoughts and hence the emotions. So here, to give an example,
Madam Besant gives an example of Chandogya Upanishad, where it is said that Atma, that is a spirit, exists in the physical body. It lives in the physical body. And Atma wanted to see, and hence the eyes were developed. Atma desired to hear, and hence the ears were developed. Atma wanted to smell, and hence the nose was developed. So, likewise, it was Atma, the desire of Atma, which led to the development of all the sense organs. And hence, it is the Atma, or the spirit that resides in the body, is the one which decides the formation of this physical body. So, this was the basic the difference between the Indian philosophists or the Indian spiritualists and the modern science that was being developed in the West. However, great amount of research still progress. There is no stopping for research and developments in the science. It's always a progressing thing. A great amount of research was continued with that approach of studying the human body in the modern science. The nervous system was mapped, the brain was mapped, analyzed. Every aspect of the brain, each and every small organs were mapped and analyzed, and its functions were mapped. And then, when these experiments continued, there were certain doubts, there were certain unanswered questions that remain in the modern science. For the activities of thoughts, emotions, and the results of what they have, what kind of results that they obtain from the study of consciousness. And great amount of all these experiments for which there were no answers have been recorded in a famous book called Philosophy of Mysticism by Duprel. So Madam Besant is quoting just one example from this book. So there was one study of psychology where people were studying the consciousness of the sleeping consciousness of a human, the kind of activity of the consciousness when the body is sleeping. So one experiment involved where they made a man to sleep, and once he is in deep sleep, they used a sharp knife and they just touched back of his neck when he was asleep. So that was the experiment. The basic structure of the experiment is they make the human to sleep and they do some activity, something, and then once he wake up, they will ask him, what kind of dreams did you have? What kind of feelings you had while you are sleeping? And then they make a note of it. So this was the experiment going on. So one of the experiment was to make a human to sleep, and then once he is in deep sleep, to touch his back of the neck with a sharp knife. And then after he woke up, they asked him, what kind of dream you had? And that man, that human, he replied that he had a dream where he murdered someone, and then he was arrested, sent to jail, brought to trial in the court. In his dream, he saw the speeches of barristers, he saw the trial, he saw the arguments and the summing up of the judges, and finally he waited for the verdict of the jury, and then finally one day he was pronounced guilty, and then he was given the punishment, and then of being the punishment was to cut his neck, and then the executor who have to execute the punishment, he brought a huge knife, and when he started to cut his neck, the knife touched his neck and he woke up. So this was the dream that he saw. So what was surprising to these scientists was just by a touch of a sharp knife on the back of his neck, before the brain could really process
the stimuli, that is the touch of the knife, before the brain could make a conclusion of what is that, this entire story was built up when he was sleeping. The entire story of he murdering someone, till the trial, till the judgment, everything. So how could this entire story was built up before the message of the sharp knife touching his neck was carried on to the brain by the nervous system? So therefore the scientist said there is some other consciousness, or there is a higher level of consciousness which is working, which is very fast, which is very large compared to the consciousness that is working in the physical body. By the time the consciousness at the physical body carries the message from the back of the neck to the brain, this higher consciousness, this larger consciousness which is working, has summed up, has brought this huge story. So that means it is very fast, it is very quick. So there is something, a different consciousness working when the human is sleeping. And I'll give you one more example very fast. And in the same series of experiments, scientists, they come up with this hypnotism, right? So we know what is hypnotism. It is a kind of prolonged dream state where the body is almost in the condition of coma and lethargy, and the human body is reduced to the lowest point of its vitality. The brain is very badly supplied with blood, and therefore there is laziness and lethargy during hypnotism. But what the scientists found is during this stage of almost a coma like condition, where the brain is very lethargic and the brain is not functioning, but there is some other consciousness which is working, which is very quick, whose memory is very strong, which is not like the memory of the where the consciousness when the human is awake. For example, when a human was asked, when a subject was asked about his childhood, he could vaguely remember certain incidents during his childhood, not completely. But when the same subject was put to trance in the hypnotism, he could clearly explain every incident that happened during his childhood. So how is that possible? When the human brain, when it is awake, when it is still in the working condition, when it is very healthy, when the blood supply is very good, so when the consciousness at that state cannot remember all the events of the childhood, but when in trance, when the brain is lethargic, when the blood supply is very less, and when there has to be laziness, but there is some other consciousness which is working, which is very active, which can remember everything, which is very fast. So these were some of the questions that were not answered. But however, the scientists arrived at a conclusion, that one conclusion, that the consciousness that is at the physical level is not the end. There is a higher consciousness, there is a larger consciousness that is working, and that is very active when this physical consciousness is inactive or made inactive. So that becomes very active. So therefore, they arrived at this one-line conclusion, which the Indian saints has long back said in the scriptures, that if you make the physical consciousness to inactive or not to disturb, and if you can raise to the higher levels of the consciousness, that higher consciousness become very active, and then you can be in that state of the higher consciousness and then understand yourself in a much better way. I'll stop here for the part 1. We'll continue in the part 2. Thank you so much. And यमुनावती जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज. या Yes, थैंक sir. यू. या थैंक यू. वेलकम. और आपका एक छोटा सा परिचय दे दूं. यमुनावती जी जो है वो एक शिक्षिका हैं. MA BEd किया है उन्होंने. और वे
बेंगलोर लॉज में टीएस की लाइब्रेरी में कार्य कर चुकी हैं। तो किताबों के साथ उनकी बहुत जिंदगी बीती हुई है वहाँ पर। 2011 से वो टीएस के सदस्य हैं। और बेंगलोर सिटी लॉज में जो थियोसॉफिकल का एक मैसेजिंग केंद्र है, सूचना केंद्र जिसको कहते हैं, उसकी वो इस वक्त कार्य कर रही हैं। विभिन्न बैठकों में कन्नड़ में थियोसॉफी का व्याख्यान देने का अनुभव है, और इसी रूप में वो यहाँ भी जुड़ी हैं। और हमें भी उन्होंने इस अपनी भाषा से लाभान्वित किया है। तो प्लीज आज का विषय आप कन्नड़ में कहिए। धन्यवाद। प्लीज गो अहेड। आई थिंक शी इज क्लोजर। हेलो, can't hear you. No, we can't hear you, Yamunavati ji. If it is not connected properly, it's all right. You can just give a call or write the chat box. Oh, she is disconnected. Okay, I think Swastika ji, are you there? Yes, please आपका वीडियो ऑन करिए. We'll go with Hindi and then take once she joins. नमस्ते। आज हम लोग ये जो बुक जो स्पीच है, आपका वीडियो ऑन कीजिए ना। हाँ, एक मिनट। तो आपका भी मैं परिचय दे देता हूँ, बाद में फिर वो समय बचेगा। स्वास्थ्य शिखा जी महापात्रा, मैकेनिकल इंजीनियर में इन्होंने बीटेक किया है। फिर बैंकिंग में फाइनेंस और मास्टर किया, और उसके बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर के तौर पर कार्य करना शुरू किया। बैंक से आती हैं और सीधे त्रिवेणी में लग जाती हैं। 2009 में उन्होंने पाइथागोरस यूथ लॉज का सदस्य वो बनी। और हम सभी जानते हैं प्रदीप महापात्रा जी और मितालिनी जी को, कि उनके प्रभाव से बहुत सारे यंगस्टर्स जिन्होंने थियोसॉफी ज्वाइन किया, स्वास्थ्य शिखा जी भी उसी में से हैं। प्लीज गो अहेड विथ योर हिंदी वर्जन। जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक यमुनावती जी हैज कम, सो आई विल आस्क हर इफ इट इज फाइन, देन वी कैन गो अहेड विथ द थिंग। हेलो, यमुनावती जी, कैन जस्ट अनम्यूट कीजिए। हाँ या सर। या प्लीज गो अहेड। स्वास्तिका जी, you wait for your turn. Shall I, sir? Yeah, please. Okay. Sorry, sir. Thank you. ಇದು ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರ ಭಾಷಣ ಆಗಿದೆ. 1915ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾರ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2025, ಇಲ್ಲಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಇಂದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಷ್ಟನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ
3 ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಉನ್ನತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿಂಡಲ್ ಅನ್ನುವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೆದುಳನ್ನ, ನರಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೂರ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳನ್ನ, ನರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜರ್ಮನಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಟ್ ವಾಗ್ ಅನ್ನೋರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಹೇಗೆ ಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಸವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಸಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅರಿಯೋದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹೊದಿಕೆ, ಅಥವಾ ದೇಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಂದೋಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೇಳಬೇಕೆಂದಾಗ ಕಿವಿ, ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನೇ ಮೂಲ,
ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಈ ದೇಹದ ರಚನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇಹ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂದಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕನಸುಗಳು ಅಥವಾ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅವನ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನಸು ಕಂಡದ್ದನ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ ಆ ಕನಸನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಾಕಿದ್ದನ್ನ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ, ಬಾಲ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಅವನ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಎಚ್ಚರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. स्वास्थ्यशिखा जी, अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज. स्वास्थ्यशिखा जी, या yes, you can go ahead. सबको मेरा नमस्कार। आज का ये जो टॉपिक है मॉडर्न साइंस एंड हायर सेल्फ। मॉडर्न साइंस, अगर हम लोग ये इसके बारे में बात करेंगे, जो स्पीच अनिबेशन जी के द्वारा दी गई थी और जो आरआर पैम्फलेट नंबर 56 में है और 1915 में दिया गया था, तो इसके ऊपर अगर हम इसकी विश्लेषण करते हैं तो जो आधुनिक विज्ञान है और जो उच्चतर जी, क्या फैन चल रहा है क्या पास में स्पीकर के? थोड़ा एयर का आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? अभी क्लियर है, एकदम क्लियर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो मॉडर्न साइंस है और जो हायर सेल्फ है, इसकी तो कोई मतलब
तुलना नहीं है या फिर इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है वो आत्मा या उच्चतर शरीर या हम जो बोलते हैं हमारे ईस्टर्न लैंग्वेज में हायर सेल्फ, इसके पूरी विपरीत हम लोगों को ये प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से संपूर्ण संपूर्ण रूप से अलग है। तो मॉडर्न साइंस में हम सेंसेस के थ्रू स्टडी करते हैं, जैसे कि हम लोग फिजिकल बॉडी की स्टडी करते हैं, एटम्स की स्टडी करते हैं। तो ये हम लोग ये जो देख पाते हैं, जो हमारी आंखों से हम देख पाते हैं, हम उसकी पढ़ाई करते हैं या उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न वर्ल्ड में होता है या जो इंडिया जैसी कंट्रीज में हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सोच, हमारा जो हायर सेल्फ है या हम जो उच्चतर आत्मा के बारे में या शरीर के बारे में विचार करते हैं, ये फिजिकल शरीर से ऊपर है और हमारा सोच वहीं से शुरू होता है। और जिसको हम खाल मतलब आंखों से देख नहीं पाते हैं या सेंस नहीं कर पाते हैं, तो वहीं से हमारा साधना शुरू होती है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि विज्ञान जो है और जो हायर सेल्फ की स्टडीज है वो संपूर्ण रूप से अलग है। लेकिन ये दोनों की जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है, उसका इंटेंशन दोनों का सेम है कि सच का पता करना और सच का खोज करना। तो शरीर के परे क्या है उसकी जानकारी निकालना। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि दोनों अलग प्रतीत हो सकता है लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड है। और ये जितना हम लोग मॉडर्न साइंस में जाते हैं और ये हायर सेल्फ की जो स्टडीज है वो उतनी एंशियंट है, जो सदियों से चला आ रहा है। तो वेस्टर्न में जब साइंस और मॉडर्न साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम लोग हायर कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। तो ये दूसरा, ये जो एक दो चीज है, मतलब जो साइंस और अनसियंट विजडम है या हायर सेल्फ है या हायर कॉन्शियसनेस है, तो ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर हम और विचार करते हैं। तो आनिबेशन जी ने लिखा है कि हायर सेल्फ या उच्चतर जो हम हैं या उच्चतर जो चेतना है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इंसान के अंदर जो जीवात्मा है और जो फिजिकल प्लेन से परे है और जो ज्ञान, तर्क या समझ से बाहर है और जो ब्रेन के माध्यम से या हमारा मस्तिष्क के माध्यम से हम उसको खोज नहीं कर सकते हैं और वो उसके ऊपर है और वो स्थूल है। जबकि हमारा ब्रेन जो है वो वो सूक्ष्म है, जो हमारा ब्रेन है वो स्थूल है। तो उस स्थूल के माध्यम से हम ये सूक्ष्म शरीर का पता नहीं लगा सकते हैं और ये ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग से परे है और उसको हम लार्जर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जो पहले, जब साइंस, मॉडर्न साइंस की जो हम पहला उत्पत्ति या जो पहला पार्ट बोलते हैं, जो पहला चीज बोलते हैं, इसको हम लोग मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बोलते हैं। और ये साइकोलॉजी का एंशिएंट साइंस या हायर सेल्फ या हायर आत्मन चेतना के साथ संबंध है। मनोविज्ञान वो होता है जो जिसमें हम लोग माइंड का बिहेवियर या स्थिति क्या है, क्या सोच है, क्या भावना है, ये सब पढ़ा जाता है और ये सब की ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी और एंशिएंट साइकोलॉजी का जो पार्ट है, अभी वो वेस्ट में डेवलप हो रही है और उसकी उत्पत्ति या आधार ईस्ट का एंशिएंट साइकोलॉजी से हुआ है। और एक चीज आता है साइकोफिजियोलॉजी, जो मनोशारीरिक विज्ञान है, जिसमें मन का जो भावना है और मन का जो व्यवहार है उसका और शरीर पे उसका रेस्पॉन्स जो होता है, उसके अंदर में जो रिलेशन है उसके ऊपर पढ़ाया जाता है। जॉन टेंडल के हिसाब से हमको कोई भी मैटर हो, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से हम जब वो मैटर को देखते हैं, तब उसमें पहले उस मैटर के अंदर थॉट्स को पढ़ना चाहिए और इंसान को अपनी भावना और विचार को पढ़ना चाहिए। कैसे? मैकेनिज्म या अपैरेटस जैसे उसको लेके पढ़ना चाहिए।
और एक दूसरा साइंटिस्ट कार्ल बॉक के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो कि जर्मन को बिलोंग करते हैं, उनके हिसाब से लीवर हमारे शरीर में जितना बाइल प्रोड्यूस करता है, हमारा ब्रेन उतना ही थॉट्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है जैसे लीवर हमारे शरीर का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, वैसे ही ब्रेन एक पार्ट है और ये थॉट प्रोड्यूस करना उसका प्रोसेस है। जैसे बाइल प्रोड्यूस करना लीवर का काम है, ऐसे ब्रेन का काम भी थॉट प्रोड्यूस करना रहता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका जो थॉट प्रोसेस है साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ईस्ट में ये हम लोग सुनते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, एक फॉर्म नहीं है बल्कि एक शाश्वत चेतना है। जो वेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि शरीर सब कुछ है, शरीर से जैसे कि ब्रेन से थॉट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वेस्ट में इसके ठीक विपरीत माना जाता है कि जो शरीर है वो शरीर नहीं है, आत्मा की एक इंस्ट्रूमेंट है, एक व्हीकल है, एक कपड़ा जैसा है। जैसे हम लोग कपड़ा ओढ़ते हैं कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ जैसे आत्मा को देखने का एक्सपीरियंस करना हो तो उसको आंख की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आत्मा कोई व्हीकल या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस गेन करती है और एक्सपीरियंस गेन करके फिर डेवलप होती है। उसके बाद हम आते हैं चाणक्य उपनिषद में। ये उपनिषद के हिसाब से आत्मा वास्तव में है और शरीर आत्मा की इच्छा के हिसाब से कार्य करता है। आत्मा जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है वो शरीर या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो गेन कर लेती है। इसका मतलब ये है कि शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला आत्मा होती है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कशन करेंगे जैसे ब्रेन थॉट्स को प्रोड्यूस करती है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो जब साइंटिस्ट ने नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में पढ़ना या रिसर्च करना स्टार्ट किया, तब उनको ये समझ में आया कि ये जो ब्रेन है ये पूरी कॉन्शसनेस की एक पार्ट है, चेतना शक्ति का ये एक छोटा सा पार्ट है जो जो कि एक मतलब हम लोग मानते हैं ना ब्रेन इतनी सोच कर सकती है, विचार कर सकती है, इतनी वास्ट है, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है और जो कि मिस्टेरिकल है। और ये टोटली ये जो उपलब्धि है और ये जो ब्रेन है, ये जो कॉन्शसनेस के रिजल्ट से हम सोच सकते हैं, कुछ अनुभूति कर सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं, ये पूरा कॉन्शसनेस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर हम लोग मिस्टिसिज्म के एक एग्जाम्पल लेते हैं डोपरल के बुक से हिसाब से कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक सोते हुए आदमी के गले पे चाकू लगा के उसको ये पूछा गया था कि तुम सपने में क्या देख रहे हो। तो उसने ये बोला था कि मैं देख रहा हूँ किसी का मैंने मर्डर किया हुआ है और उसके लिए उसको ट्रायल पे भेजा गया है और वो पूरा ट्रायल में क्या क्या हुआ उसने पूरा डिस्कशन किया, पूरा उसका व्याख्यान करता है। फिर वो बैरिस्टर के सामने उसको कैसे मतलब हाजिर किया जाता है और उन लोग कैसे उनके मतलब आर्ग्यू करते हैं, वो सब वो सपने में सो के देख रहा है। फिर वो ये देख रहा है कि उसको कैसे दोषी पाया जा रहा है और उसको मतलब सजा सुनाई जाती है। फिर उसको जेल में लिया जाता है और वहां पे वो कुछ दिन रहता है। फिर उसके नेक पे एक हथियार चलाया जाता है, तब उसकी आंखें टच किया जाता है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो ये इस तरह से मतलब उसको सब ये जो बोलने का ये जो सपना था ये एक एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो जब इंसान सो जाता है तब उसका फिजिकल ब्रेन मतलब फिजिकल ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहती है, फिर भी वो कैसे सब कुछ समझ सकता है, इतनी फास्ट कैसे काम कर सकता है जो ब्रेन के लिए भी मुमकिन नहीं है, इतना फास्ट काम करना, इतना फास्ट इमेजिन करना। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है, मतलब इसका मतलब यही होता है कि ब्रेन के समझ के परे कुछ है
जो हमको या तो पता है या तो पता नहीं है, लेकिन ब्रेन के समझ के परे कुछ है, कुछ ऐसा सूक्ष्म मीडियम है जिसमें कॉन्शियसनेस काम करती है, जो ब्रेन समझ नहीं पाता है। और हम लोग सब हिप्नोटिज्म के बारे में तो जानते हैं। हिप्नोटिज्म में जैसे क्या होता है ना, वहां पे ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है और ब्रेन कोमा में चली जाती है, और शरीर के सारे जो शक्तियां हैं वो जैसे लगभग खत्म ही हो जाती है। पर और ब्रेन को ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। लेकिन वो कंडीशन में ब्रेन थॉट प्रोड्यूस जनरली नहीं कर पाता है। पर जब वहां पे किसी को कुछ पूछा जाता है, यहाँ पे किसी को कुछ सवाल किया जाता है, तो वो स्थिति में वो इतना स्पष्ट रूप से उसका जवाब दे पाता है, जो जागते हुए स्टेज में वो नहीं दे सकता है। तो ये सवाल भी मतलब सोचने वाला है। जबकि हम जागते रहते हैं, हमको अगर कोई कुछ पूछता है हमारे पास के बारे में, बचपन के बारे में, तो हमारा हम कुछ भूल जाते हैं और कुछ जवाब दे पाते हैं। लेकिन जब हिप्नोटिज्म के स्टेज में हम लोग रहते हैं, तब हम बहुत बेटर वे में जवाब दे पाते हैं, कुछ भी भूलते नहीं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो हमारा जो ईस्टर्न फिलोसफी है उसके हिसाब से जो जागते हुए जो हमारा चेतना शक्ति है, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरी चेतना शक्ति का। मैं यहाँ पे पार्ट 1 खत्म करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। मैं आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। प्लीज गो अहेड विद द इंग्लिश वर्जन। थैंक यू। Okay. So in part 1, we saw how the initial studies of the modern science were done, and then a conclusion was arrived that there is something beyond this consciousness of the human body when it is in the in the state of awake, or what we can see, what we can perceive with our eyes and senses. So there is something beyond that. That was the conclusion that arrived in the initial stages of the research in the modern science. However, there were certain people who took this in a different way. Say, for example, Lombroso in Italy and his school of thinking and his followers, they even made fun of these things. They said, they made a statement during those times, not now. The visions of prophets, of the saints, of the seers, all their testimony to the existence of superphysical worlds were the products of disordered brains, of diseased brains, or overstrained nervous apparatus. They made a conclusion that all these prophecies who talk about superphysical worlds, who talk about the higher consciousness, and all those things, they said all these thoughts are the products of an abnormal brain, a diseased brain, not a normal brain. And they even made some studies and they proved that all these people who talk about superphysical things, how their brains and nervous systems are totally different. And they made a statement that the brain of the genius, the so-called genius, and the brain of the madman were akin, were same. So hence, in that school of thought, genius is alike to madness became a very famous axiom. So they thought all these people are mad, and all these thoughts about superphysical things, higher consciousness, spirit, and all those things comes from these diseased brains, and we don't have to take them seriously. So when such a school of thought was developing and people started getting evidence that yes, these brains were diseased and there is some problem with the nervous system of these people who talk about such things, at first there was silence because nobody could dare to answer them. But however, certain people like Dr. Maudsley, a famous doctor, he came with an answer. And he said, maybe it's the law of nature that the nature selects certain
special brains, certain special people to teach something to the people or to bring about a radical change in the people. So it's in the nature that selects certain abnormal brains, and she needs brains which are different from the ordinary. And therefore, that may be the one reason why uh, certain people who talk about superphysical things, maybe they have a different kinds of nervous system and the brain. That was answered by Dr. Maudsley. He was a doctor. However, slowly more and more answers came in for such a questions. One of the answer was, when there is an unusual excitement, when there is trance in the name of devotion, and when the brain answers to certain higher vibrations, then there is a very great chance of the nervous breakdown or certain side effects that cause to the brain and the nervous system. And therefore, that may be one of the reasons why such nervous system and the brain looks to be diseased. In the ecstasy of prayer, during fasting, when the body is very weak, under great stress of excitement, the brain gets certainly affected far more easily than the normal conditions. And hence, that may be the reason why for certain people who could see that higher vibrations, who could feel that higher vibrations, who could go to that level of trance through devotion or through wisdom, they have their side effects on the brain and the nervous system. That was another answer which came very slowly. And there was one example given by Dr. Besant. She says, when you take violin or veena in the Indian context, when a string plays a note, but when you want a certain higher note, you start tightening the string to reach that higher note. But there is always a risk of the string getting broken when you over tight it or when you overdo it to reach very higher notes. So therefore, this may be one of the reasons where when the brain and the nervous system are being tuned to receive higher vibrations, to be in the trance, to be in that higher consciousness, to dwell in that higher consciousness, there is always a risk of nervous breakdown, a damage to the nervous system and the brain. And therefore, that may be one of the possible reasons. However, what is the solution for such things? The solution for such side effects of the nervous breakdown lies in the Indian philosophy. The Indian philosophy teaches yoga, and we all know that the process of yoga, it starts from the purification of the body, purification of the mind, bringing the emotions under control. So it starts from body, emotions, and mind purification to be in the control and to fine tune them to perform higher practices of yoga and meditation. So in yoga, it's a gradual process where the body is prepared, the emotions are prepared, the emotional aspect of the human is prepared, the mind is prepared in order to receive the higher vibrations through the through the higher practices of yoga and meditation. So therefore, in this case of the Indian philosophy, in the Indian context of the practice of yoga, there is no risk of nervous breakdown or damage to the nervous system or to the body when that higher vibrations, when certain higher vibrations are being received or perceived or the state of trance is achieved. So we all know that in the process of yoga, it's not that physical exercises or the hardcore yoga practices that are being taught to any student in the beginning. It starts from basic things. I think I did a series of lectures on yama, niyama, asana,
pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. So these were the series of this is a process, a series of practices which a student has to follow, and with the guidance of a teacher. It's not that he do it by himself. So therefore, in this process of yoga, the body becomes pure day by day. The consciousness develops slowly, its higher powers, and then that will avoid the brain becoming a diseased brain or any damage or overstraining, and hence that higher vibrations are received without any injury to the nervous system or any morbid results. The Eastern philosophy, that is the Indian philosophy, and the process of yoga, it recognizes the dangers of nervous disturbance and enables the necessary sensitiveness to be attained without overstraining of the physical instrument, that is the body. And then further, in the modern science, it was discovered finally that we all thought that the brain cells or the nervous cells, the structure, the arrangement, that decides the kind of quality of thought and emotions that come out of that particular human being. But finally, in the modern science, it was discovered that the thoughts can in turn affect on the development of the brain cells and its arrangements. So it was found that thoughts can, the brain cells in which thought is carried, they develop and increase in size and its complexity by the process of the thought. So when we know that the thoughts are being produced, I mean, the modern science approach was the thoughts are being produced in the brain by the brain cells. So it was found that it's not the arrangement of the brain cells or the arrangement or the complexity of the structure that decides the thoughts, but thoughts can affect on the structure and arrangement and complexity of these brain cells. And then more and more complicated arrangements were affected by the thoughts in order to express higher thoughts. So that was the discovery of the modern science during those times. So for that, but that was already well known in the Indian philosophy of yoga, the practice of yoga. The yoga practice of concentration, studying the mind, fixing the thoughts, observing the thoughts, they made the brain cells grow. It was well known in the Indian philosophy, and thus creates an instrument which is adaptable for higher thinking. So for this, I would like to give one recent discovery of the effects of yoga on the human body. The practice of yoga and concentration make brain cells to grow. This is a recent discovery. It was found that yoga acts as a stimulant for the GABA, that is the gamma aminobutyric acids in the brain cells, which are responsible for the good mood. And yoga also makes the brain cells grow and multiply and develop in certain parts of the brain like hippocampus and prefrontal cortex. So these are all the discoveries of the modern science, the recent discoveries. So therefore, in the Indian context or the practice of yoga, it was always taken care to not to damage the nervous system, not to damage the brain. So to slowly make the brain, the nervous system, the entire human body generally, and the emotions and the mind to prepare for the higher practices of yoga and to receive the higher vibrations of the from the higher consciousness. And it was always known that man is a consciousness expressing his powers through the body, which he molds to its own purpose.
that man's consciousness in the brain is far less than his consciousness out of the brain. That man uses brain as an instrument on the physical plane, but is not limited by it. He is not confined by it. So therefore, it was always accepted in the Indian philosophy that man is not confined by what appears to be the consciousness at the physical level. There is something beyond it, and he can reach to that level through the practice of yoga without damaging his physical body. And in the modern scientists like Sir Oliver Lodge, he even declared through the investigations of hypnotism that the study of consciousness, the study of abnormal states of consciousness, prove that human consciousness is larger than the consciousness in the brain, and that there is much more of us outside the body than is shown by the working of the brain. So finally, the modern science has reached to that level where all these accepted dogmas, accepted philosophies in the Indian context are slowly getting proved one by one. And where they started from studying the human body, and then they reached that there is something beyond this human body, something beyond this, the consciousness of the brain. So therefore, Madam Besant says, do you now see why I put together modern science and higher self? They're not something totally different. The higher self is the consciousness beyond the physical, the larger, wider, greater consciousness, which is our real self. She says that is the real self. And unless you study that real self first, you will not understand the the physical body or the activities of the physical body, mind, and emotions in this physical world. The self of which the consciousness in the brain is only the faintest of reflection. So the consciousness of brain is just a very small, faint reflection of that higher consciousness. The body of ours is only a house in which we dwell for our physical work. We hold the key of the body. We should put it in the lock by yoga and try and release the imprisoned consciousness. So that is the statement by Dr. Besant. She says, we do have the key for this body. And through yoga, we use this key into the lock. We put this key into the lock and then open the lock and release that higher consciousness, which is imprisoned. And every one of us is a divine fragment. Every one of us an eternal spirit. It's not that only few people get this higher vibrations and they can feel this higher consciousness and then bring about all these theories. Everyone can do that. Everyone can attain that state. And everyone can strive to attain through matter to consciousness of our own divinity. That is the teaching of all faiths. That is a fundamental principle of life, of religion, of nature. And modern science is finding that even physical nature is not intelligible without the understanding of the higher world. So if you don't understand the higher world, if you don't understand the higher consciousness, even the physical nature you cannot perceive or you cannot understand anything. And the modern science is finding its ways to understand that. Without the recognition of larger possibilities, modern science cannot understand the physical body. So therefore, I would like to conclude by saying that modern science and spiritual science, these are not two different things. These are not opposing things. These are not opposite poles. What I see is modern science gives evidence back to the spiritual science, whereas spiritual science gives hypothesis for the modern science to prove. The spiritual science gives challenges to the modern science to prove the hypothesis, and hypothesis can be made in the modern science by the help of spiritual science. And then finally, an evidence can be found, which is given back to the spiritual science. And hence, these two aspects, there is the give and take relationship between these two aspects. Thank you so much. Thank you so much, Pradeep ji. And please, Yamuna ji, go ahead with your word. Thank you. Yes. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಟಲಿಯ ದೇಶದ ಲೋಂಬ್ರೋಸ್ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಾಧು ಸಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಚಾರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೆದುಳು ಹುಚ್ಚು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹದ್ದು. ಆಗ್ಲೇ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಯುಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆಗ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಂಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೆದುಳುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಎಷ್ಟು, ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬ್ಲಾವಸ್ಕಿ ಅವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಮೆದುಳುಗಳನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾನವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ದೈವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾದ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೀಣೆಯ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತಂತಿಯನ್ನ ಮೃದುವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತಂತಿ ಮುರಿದೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಆ ತಂತಿನೇ ಮುರಿಯುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಅದು ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗಬಹುದು, ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ
ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗದೆ ಉನ್ನತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಾದ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿ, ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಂತರ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮೆದುಳು, ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಃಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮನೋರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಆ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಉನ್ನತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ಉನ್ನತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕಡೆಗೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಾನೆ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದವಲ್ಲ, ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದುದು, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೃಢತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವನ ಸಂಸರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. धन्यवाद बहुत बहुत। सस्त्रिका जी, आप अपना अंतिम पार्ट शुरू कीजिए हिंदी में, पार्ट 2। थैंक यू। हाँ, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये कंक्लूजन में आके तो पहुंच ही गए थे कि कुछ तो है जो ब्रेन के परे है या ब्रेन के समझ के परे है, जो हम एक्सपेरिमेंट से भी, हमको साइंस से भी ये समझ में आ गया कि नहीं, कुछ तो है जो ब्रेन के अंडरस्टैंडिंग या ब्रेन के थॉट प्रोसेस के ऊपर है। और ईस्ट में भी हम लोग वही सोचते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा बसती है और शरीर आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल है जिसको आत्मा चलाती है।
तो इसके ऊपर लोमरस साइंस स्कूल्स में एक साइकोलॉजी का स्टडी किया गया था। उसमें ये कंक्लूजन बताया गया था कि जो जीनियस लोग हैं और जो अ, जिनका दिमाग ये कुछ इश्यूज है, उनका ब्रेन कुछ सिमिलर है। और ये दोनों कंडीशंस, ब्रेन का एबनॉर्मलिटी या सोच की एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल थिंकिंग से या डिसऑर्डर से पैदा होती है। तब ये बात बहुत बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम लोगों को लगता है ये कैसे सेम हो सकता है। तो जब अनयूजुअल स्ट्रेस होता है या अनयूजुअल एक्साइटमेंट होता है, तब ब्रेन ऑर्डिनरी फंक्शन करना बंद कर देता है और हाई वाइब्रेशन पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे हमारा कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस है, बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम्स में हम लोग रहते हैं, तब हम लोग नॉर्मल वे में उसको सोच नहीं पाते हैं, हमारा ब्रेन हाई वाइब्रेशंस पे काम करता है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस सिर्फ जीनियस लोगों को नहीं होता है, ये सब स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस सबको आता है, एक एवरेज इंसान को भी आता है। जैसे कोई फास्टिंग करता है और जिसका शरीर वीक हो और जिसका जो स्ट्रेस देके जाता हो और जिसका कुछ इश्यूज हो, तो उसमें वो टाइम पे ब्रेन हाई वाइब्रेशंस भेजती है। और ये जो हाई वाइब्रेशन, ये हेल्दी वाइब्रेशन, सॉरी, हेल्दी ब्रेन का रिजल्ट नहीं है, हेल्दी ब्रेन का ये स्वरूप नहीं है। तो ये एक वेस्ट की रिसर्च है और इसमें एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम कोई वायोलिन या बीना बजाते हैं, तो जब हम नॉर्मल रिदम में बजाते हैं, नॉर्मली जो चलता है तो हम नॉर्मल रिदम में बजाते रहते हैं। जब हम लोगों को हाई नोट पे बजाना हो, तब हम उसके स्ट्रिंग को टाइटन करते हैं। तो वैसे ही जब हमारा ब्रेन जो हमेशा नॉर्मल स्ट्रिंग पे चलता है, नॉर्मल हिसाब से रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन जब कुछ सिचुएशन बहुत इंटेंस हो या कुछ सिचुएशन सही नहीं हो, तो ब्रेन का जो स्ट्रिंग है वो ब्रेन टाइटन करती है। कैसे? कि जैसे वो कुछ हाई वाइब्रेशंस भेजता है, तो वो ये एक एग्जांपल है जो ब्रेन की स्ट्रिंग को टाइटन करने का बताया गया है। तो ये जो हाई स्ट्रिंग हाई नोट पे या हाई वाइब्रेशंस ब्रेन सेंड करता है, ये एक डेंजर है। ये यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम के ब्रेकेज की भी संभावना हो सकता है, जो कि सही नहीं है, जो कि नेचुरल नहीं है। तो ये जो हमने अभी रिसर्च हमारा हुआ वेस्ट के हिसाब से, हाई वाइब्रेशन नोट्स ब्रेन सेंड करता है, तो उसको और उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी अबनॉर्मल चीजें हमारे साथ घटित हो सकता है। तो ये जो अनबैलेंसिंग मैकेनिज्म है, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, और इसका सोल्यूशन लेके आया है हमारा ईस्टर्न फिलोसफी। ईस्टर्न फिलोसॉफी में ये बताया गया है कि जब स्ट्रेस डेवलप होता है और जिसके वजह से ब्रेन में ये सब प्रॉब्लम्स होता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है, तो ये इसका सॉल्यूशन है योगा। तो योगा एक ऐसी चीज है जो स्लो एंड स्टेडी है और जो धीरे धीरे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है और अपने हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है, ब्रेन को और हमारे मन को शांत करता है। और ये जो योगा के मतलब ये सिर्फ और सिर्फ योगा और या मेडिटेशन के माध्यम से संभव हो सकता है। जो योगा प्रैक्टिस करते हैं वो भौतिक सुख से विमुख रहना पसंद करते हैं, जैसे कि मादक द्रव्य आदि का सेवन करना वो पसंद नहीं करते हैं। तो इसके वजह से योगा परफॉर्म करने से हमारा जो हायर सेल्फ है या हमारा जो आत्मा है, उसके वाइब्रेशंस जो है, मतलब यहाँ पे हम लोग लोअर लेवल्स पे या ब्रेन के लेवल पे हम लोग शांति फील कर पाते हैं, हमारा ब्रेन और प्यूरिफाई होता है, हमारा मन शांत होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई नर्वस सिस्टम के डैमेज नहीं करता है या कोई ब्रेन की अबनॉर्मल फंक्शन को ये क्रिएट नहीं करता है।
और ये बिना क्रिएट किए हमारा जो प्रॉब्लम्स है या हमारा जो स्ट्रेस है, इनको एक बेटर वे में, एक मोर अच्छे रास्ते में, अच्छे माध्यम से ये इसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाती है। योगा करने से हमारा मन और सारी शरीर का एक बैलेंस रहता है, और हमको ये बैलेंस के माध्यम से हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो इशू है, हम उसका एक बेटर सोल्यूशन निकाल पाते हैं, हम उसमें उलझे नहीं रहते हैं। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन सेल से थॉट सिर्फ प्रोड्यूस नहीं होता है, थॉट भी ब्रेन सेल को अफेक्ट कर सकता है। और एक बात योगा के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मन की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। हमारा कोई पर्टिकुलर चीज पे हम जो ध्यान देते हैं वो हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, और हमारा जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि शरीर है, मन है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारे इमोशंस है, उनके ऊपर ये अच्छा काम करती है, और हमको अपने आप को ये स्पिरिचुअल वर्क के लिए प्रस्तुत कर पाती है, हमारे शरीर को या हमारी मन को। और मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन में न्यू मैकेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो योगा और मेडिटेशन करने से बैलेंस लूज करने के बिना, कोई नर्वस सिस्टम डैमेज करने के बिना, कोई प्रॉब्लम या कोई अपने शरीर को डैमेज करने के बिना हम लोग वो सब कर पाते हैं, और अपने आप को रेडी कर पाते हैं हाई पर्पस या हाई वर्क के लिए। और ये भी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस में प्रमाणित हुआ है। तो अभी ईस्ट में ये जो योगा के बारे में जो सोल्यूशन के माध्यम से हमने अभी सुना है, तो इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, तो जब ब्रेन के माध्यम से प्रकाशित होता है, वो बहुत ही कम पावरफुल है। जो एक्चुअल इंसान है वो सब में, और वो उस एक्चुअल इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, मतलब जो हायर सेल्फ है, या फिर जो चेतना शक्ति हमारे अंदर है, पूरी चेतना शक्ति, उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है। और सर अलिवर लॉज के कहने के हिसाब से कि इंसान की चेतना ब्रेन की फिजिकल चेतना से बहुत बड़ी है। तो मैडम अनिपेशंत ने लास्ट में ये बताया है कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है या फिजिकल चेतना शक्ति है, वो एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। वो बहुत बड़ी छोटा सा कमरा जैसा है, बहुत बड़ी हायर कॉन्शियसनेस का, और जो हायर कॉन्शियसनेस है वो बहुत वास्ट है, और हमारे सोच के और एक्सप्रेशंस के परे हैं। और ये सिर्फ एक के पास नहीं है, ये सबके पास है, और ये डिवाइन इसके डिवाइन फ्रेगमेंट के एक एक हिस्सा है, और वो डिवाइन शक्ति सबके अंदर है, जो कि अनलिमिटेड है और पावरफुल है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है और ये जो हायर सेल्फ है, या जो आधुनिक विज्ञान और आत्मा या हायर चेतना है, ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही वक्ताओं को, बहुत ही सुंदर रहा मामला। और प्रदीप भाई, आपका तो कहना ही क्या है, आप जो तैयार करते हैं वो इतना सरल तरह से समझ में आता है कि कोई भी भाषा हो, एक प्रभाव आप ही का बना रहता है। सदन भाई हैं, अर्चना जी हैं, और कोई लोग कुछ कहना चाहते हो तो आपके लिए मंच खुला है अभी। अपने वीडियोज ऑन करके आप शेयर कर सकते हैं आज का अनुभव। शिंदे जी तो हैं ही, और कोई इस बीच में आप कुछ और ऐड करना चाहते हो प्रदीप जी तो कह सकते हैं, समय की सीमा होती है, कुछ विचार अगर रह गए Nothing much to add. I will be happy to see comments by Harshvardhan ji, Shinde ji, and others. श्योर श्योर। जी 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 जी। तो हर्षवर्धन जी को बोलूं उसके पहले चैट बॉक्स में लिखा है इन्होंने, विवेकानंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए ना। नहीं, आपने लिखा है आई विल, तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। ओके, स्वस्तिका जी और यमुनावती जी, हाउ डिड यू फील अबाउट द सब्जेक्ट, कैसा लगा आपको?
और क्या आपको सीखने को मिला, एक थोड़ा सा हम ये भी अनुभव शेयर करते हैं अपना। विमल जी, आप रहते हैं तो आपकी टिप्पणी हाँ, हमें आइए, अगर आप हैं तो वीडियो चालू कीजिए। हेलो। ऑफ कोर्स कंचन गुप्ता जी, क्या बोलिए। Yeah, very nicely done. I mean, this whole thing is so beautiful. This aspect that the consciousness is far bigger than what we know of, and science is coming to it slowly. And what's beautiful is that 100 years, 115 years ago, this article was written, and it is still relevant today because science has not progressed that much. कि हम नहीं कह सकते कि it's not relevant. And इसमें ना एक ब्यूटीफुल चीज लाइक व्हाट आई हैव रेड दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड द परमानेंट एटम. तो हर मेंटल परमानेंट एटम है, फिजिकल एंड एस्ट्रल परमानेंट एटम. When the Christ was born, which was in the first century, he used the same permanent atoms as the Buddha. And after that also that same permanent atoms are used by Shankaracharya. So though this aspect that something permanent, they don't waste those permanent atoms, they keep on getting reused. That's also a very interesting thing to see in this whole business of consciousness. That's all. Thank you. Yes, Kanjan ji, you can go ahead. कुछ कहना है आपको? Am I audible? Yes, sir. Shinde ji, please go ahead. After individualization, there is a Sutratma and connected by permanent atoms. These permanent atoms are nothing but the 7 principles. They are concentrated in those energy form, like dots or whatever you may call. And those permanent atoms, not only in Buddha, we also have our own permanent atoms. And according to those permanent atoms, we gather our various vehicles around the soul. That is what permanent atoms theory is put forward by the Theosophical Society, besides the septenary theory. Well, Pradeep has dealt very nicely, and it is the topic very interesting, spirituality and modern science. So spirituality and modern science topic dealt by Annie Besant, because she is the combination of both the spirituality and science. She was the science graduate actually. So she was very much interested in linking these two. And it is interesting as it is described very nicely. So what we have to remember is, I think there are steps. It is a process. When we link of consciousness and modern science, these steps can be recognized beginning with idea. We have an idea. Later on, the idea gets concentrated to form a thought. Then it is mixed with the feeling. Thoughts and feeling, they are very close. And then we plan something. And that planning and working out leads to our habit. And that habit makes us to commit something for commitment. And that becomes, commitment itself becomes the lifestyle. And our lifestyle changes. This is the sequence, how it begins with the idea. Universal brotherhood is also a noble idea. If we begin with this noble idea and start thinking about the universal brotherhood, then our feeling also follow. And we plan to form the nucleus of universal brotherhood. That becomes the habit in our lodge. We commit to the Theosophical Society and start leading theosophical life. And there will be a great change in the world. This is what the spirituality is aimed to bring
peace in the world. But it begins with our individuality, individual idea, how we hold that idea. And therefore, the golden stairs, these are the ideals to be held upon and to move on. That is what Annie Besant wanted to make it clear to all of us, how we can help the whole world through Theosophical Society. That is what you have already told everything, but Annie Besant's lectures are very important, which need to be contemplated by everybody. And we enjoy her thoughts. Thank you very much for giving such inspiring talk. Very nicely you dealt with. And all translation in Kannada and Hindi I could understand. Yamuna ji, thank you. And also Swastika Mahapatra also. Thank you. Yeah, okay. Yes, Harshad. It's always a wonderful thing to read Annie Besant's speeches when compared to books written by Annie Besant. It's my personal experience, because while giving a speech, she becomes a totally different person. The energy that is coming through her words, is totally different from sitting and writing a book, compiling the topics and editing it. That's a different concept. But when she stand up for speech, when you see word by word, you can feel that energy. That's my personal experience. Definitely, the author turns into orator. Yes, Harshadji, go ahead. Yes, too much happy today that the illustrative mind goes beyond the understanding of our own consciousness. So, Pradeepji, you have gone beyond that particular periphery, and really it is the matter of having a kind of studious mind. That is the main function, actually, because if we don't have a studious mind, we cannot penetrate into such subject. And of course, with the translation in Kannada and in Hindi, this particular understanding deepens with the psychological level also. Because we listen to in Hindi or in English or in Kannada, listening to is also an art. So psychologically, when we come across such a subject with depth, it is the subject with depth. And when we have the human psychology, it must have the illustrative mind to understand the scientific approach. So in theosophical literature also, Annie Besant insisted on such topics where our mind works, of course, but with the scientific approach. So that is also another kind of understanding from Annie Besant's point of view. Now, second thing is about the contemporary writers. When Annie Besant gave the lectures, she spoke on science and theosophy on different subjects. At the same time, all over the world, there were such contemporary writers and scientists, those who also had this kind of concept in their minds. Because mind cannot work without the help of the physical understanding. So that comes with the learning process. So first of all, we must have the learning process. And why learning process? Because we are all in the hall of ignorance. So that hall of ignorance must be made very easy with the understanding of our own psyche. And when we enter the hall of learning, we come to such illustrative mind. And there we have other kind of illustrative examples, our own psychological approaches, whatever we, because you gave that example of that person who committed a crime, and in that way, what he might not have done in the physical world when he was awake. But when he was psychologically in the deep sleep, he came to know certain things. So hypnotism and other such theory or the mental practices were there during that time, but they were full of such unconvicted things. So why? Because the experiments were going on, but they were not complete in themselves. So that was the main reason behind this. But Theosophy made it very clear through Dr. Annie Besant's writings. This is more important. This is our legacy. This is our real understanding. And therefore, we make ourselves able to enter the hall of wisdom. So that is the main thing for us to understand.
We must have all the illustrations, we must have all the examples, we must go deeper into the writings of Annie Besant and other writers who are really versatile in understanding such a psychological level or such subjects which touches the psychological level. So that is also main thing. Okay, lastly, I must tell one thing about the particular work that we carry out. Even though we fail, even though we are disappointed, even though there are the black clouds, even though we have the adversities, we should not shun anything which is very important in our life to do the best at our psychological level. We should never be frustrated. We should never get disappointed. Of course, we have the failures. What happens? Any experiment that is taken up, what the scientists had done, more experiments, more failures, and again they reach that particular top. And in that way, that particular top was achieved due to the psychological approach. This is the main crux of this article. So, whether it is the scientific or whether it is psychological, our mind should be applied in the way what we understand properly, and then whatever we understand that should be given or we should share with others. And then, if we write it, it would better. Our writing will be very clear, and we understand it more. So, in that way, when we listen to Hindi, language or we listen to Kannada language, it directly touches our heart. See, what Yamunavati, you are speaking in Kannada, I was just having this kind of psychological understanding. Whether I understand Kannada at least 50% because certain words are connected with the Sanskrit. Of course, we understand Hindi. Yeah. So that is also the psychology. Our understanding should be broadened. It should be deepened in the way. So language should not be the barrier in that way. We should be with the devotional mind and we should think over that. So that is the main thing. Of course, certain subjects are very, very far off from our understanding, or they may be very serious, but at least our approach should be like that. And that approach is scientific approach. Thank you very much. Again, I congratulate all the three speakers, especially Pradeep ji for choosing such subject, and Yamunavati ji for translating in Kannada, and Mahapatra, sister Mahapatra. Her name is very peculiar. I like that Swasti Shikha. That is also kind of symbolical name, very illustrative name. So thank you. I congratulate. Okay, I finish here. Thank you. Thank you so much. And I think it's already 8:15. So Hello. आप कुछ कहना चाह रहे हैं विवेकानंद जी? कहिए. जी, first of all, I want to thank all the speakers as they have enlightened my mind with their beautiful speeches. I want to say something from the speech of Annie Besant. In her speech, Annie Besant had mentioned a well-known psychologist as a German Karl Law, declaring that the brain produced thought as the liver produced bile. That perhaps was the most extreme statement of the school of thought represented by many of the German thinkers, which modern science was following. Psychology of the East was just opposite to that, was founded on the idea that man in his essence was not a body, but a living spirit, was not a mere form, but an eternal intelligence. This entity, Jiva or Jivatma, was the primary thing to be understood. Eastern psychology declared that the primary fact was the fact of consciousness, and that matter was its instrument. That is put strongly and clearly in the Chandogya Upanishad. It is declared in this Upanishad that Atma exists and the bodies and the senses are all the results of the will of Atma. Upanishad declares
The eyes are for the perceiving of that being who dwelleth within the eyes. Atma is the primary fact. The opposition between the Western thought and ancient thought of the East, the one beginning with the body out of which the consciousness grows. Yes. The other beginning with the consciousness by the activity of which gradually the bodies were formed. We have to keep this fact in mind as we follow out the lines of our study. Thank you. You have a question or you just wanted to read this? Get the whole thing. Acha. Okay. Yes, Atul bhai, please go ahead. અર્ચનાબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. Om Sarve Vai Sukhina Santu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.